हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम ना स्टार्ट करें ड्यूरिन क्वेस्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, जो कि अब खुल चुका है। आ, ठीक है। और आगे की चीजें करेंगे, और बाकी आज इवेंट भी कंप्लीट, पहले इवेंट कर लेते हैं, ड्यूरिन क्वेस्ट बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो कल वाला ही है। अभी एक तो हमें ड्यूरिन क्वेस्ट करनी है, और कुछ और भी करेंगे आज, एक दो वर्ल्ड क्वेस्ट भी करेंगे मेरे जो पेंडिंग है, वो भी करेंगे आज। पहले इसको इवेंट खत्म कर लेते हैं।
तो इवेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब और भी कुछ करेंगे हम ट्राई। ओके, एक से पहले आर्टिफैक्ट करते हैं, फिर आर्टिफैक्ट के बाद और दो तीन चीजें करेंगे। आर्टिफैक्ट के लिए हम जाएंगे नोड क्राई। नोड क्राई में हम करेंगे, हमें चाहिए एसकेएम, क्योंकि कोलम्बिना को शायद एसकेएम ही चाहिएगा शायद। तभी वो देखना पड़ेगा जब आएगी, पर कोलम्बिना तो चाहिए। Can't hide this. With one heart, we pray. It all adds up. उसको एचपी चाहिए। No more lies. Mind the side तो मुझे effects. ऐसा लगता है उसको Follow भी the ना frosty in the वो bowl. दे दूं It all adds up. एसकेएम रेडी करके रख लेते हैं ना। एक मेरे को ना डीप वुड चाहिए, रोमा के लिए डीप वुड ही चाहिए मेरे को। डीप वुड बिना काम नहीं चलेगा रोमा का। तो मेरे को डीप वुड फायर करना है। अटैक का कुछ काम नहीं है। ऐसे तो मैंने एक अटैक भी लॉक कर रखा है जो कि गलत है, उसको भी ठीक करूंगा मैं अभी। No more lies. Mind the side effects. With one heart, we pray. Can't hide the truth. क्रिएट ही नहीं किया दो बार कोई। It all adds up. दो बार क्रिएट नहीं करती ना, मतलब करती तो है ज्यादातर टाइम। अभी क्रिएट भी बहुत कम है, बट इस पे 35 भी 36 है शायद क्रिएट पे। ये भी नहीं चलेगा। उसको चाहिए एचपी, क्रिएटेड, क्रिट डैमेज, फ्रीना की तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली फ्रीना की तरह बिल्ड करनी है। बस सेट अलग है हमें। और ओ शिट, मैं भूल गया। हमें आज कोलम्बिना के लिए मूनलाइट फार्म करना था, बट ठीक है। कल करेंगे। कल ये दोनों ना कल मूनलाइट पे लगाएंगे। मूनलाइट तो कल होएगा ही शायद, वरना कल अभी लिमिटेड टाइम के लिए तो अवेलेबल रहेगा, क्योंकि 7 दिन के लिए रहता है। वो भी करेंगे। पर अब और क्या कर रहा था मेरे को, हाँ मेरे को करना था वो डी वुड, जो अच्छे नहीं है वो डी वुड मिला लेंगे हम। एक बार चेक भी करेंगे जो कि हमारे लिए काम के नहीं होंगे, जो कि सिल्किन मून में काम के नहीं होंगे। और एक एचपी गोबलेट है, हम हमें जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसके लिए, क्राफ्ट के लिए। हाइड्रो 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 अटैक, ये भी काम का नहीं, ये भी काम का नहीं है, ये भी नहीं। एचपी, हाँ इसको रखेंगे। ये हम ना उसको ऑफ पीस दे सकते हैं, जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये दोनों ऑफ पीस जा सकते हैं कॉलम बिना पे। जैसे कि ये भी जा सकता है, एनर्जी रिचार्ज है इसमें बहुत अच्छा। तो एनर्जी रिचार्ज भी हमें चाहिए। एलिमेंटल मास देखेंगे हम इसको। हिलिंग बोनस तो चाहिए तो, लेकिन अभी के लिए तो रखते हैं। मैं तो इसको देख रहा था, हाइड्रो डैमेज बोनस नहीं चाहिए, पायरो रख लेते हैं। क्योंकि स्टैट्स भी अच्छे नहीं है वैसे तो, पर रख ही लेते हैं। एचपी है, एनर्जी रिचार्ज है, और क्रेट रेट और क्रेट डैमेज है, जो कि है ही नहीं। हम्म, ये रख लेते, कुछ तो हो हमारे पास। हाँ ये रखना है, ये अपग्रेड करेंगे।
एचपी ये मिल गया, एचपी हमें एक, तो 3 तो हो ही गए हमारे। एक एचपी साइंस और मिल जाए ना। ये भी क्रेट रेट है ना, क्रेट रेट में कुछ है ही नहीं। हिलिंग बोनस रख लेते हैं, एलिमेंटल मास्टरी रख लेते हैं, रेट डैमेज पर हटा देते हैं, ठीक है। पर यार ये मैंने बोला हाँ, ये तो एचपी सर्कुलेट है, हमें तो क्रेट डैमेज सर्कुलेट चाहिए ना। ओके, अटैक ये मिल गया, एचपी सर्कुलेट, हाँ ठीक है, तो बाद में हटाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डी वुड है ना, हाँ डी वुड है, तो करते हैं। इसको हमें चाहिए ईएम, हाँ ईएम चाहिए इसमें, ये आई तो है ईएम इसमें, इसमें एनर्जी चार्ज नहीं है। और ये लॉक कैसे कर दिया इन्होंने, बल्कि ये लॉक करना ठीक नहीं। अच्छा तो वैसे भी नहीं है, कहाँ है डीबूट, कहाँ गया ये भी नहीं, डीबूट डीबूट, हाँ ये भी अच्छा नहीं है। तो ये एक ही मिल जाए, ये भी अच्छा नहीं होना, ये भी, ये मे भी यूज हो सकता है, लेकिन हमें को ना इसको चेंज करना है। लोमा को एस्केम पे रख रखा है मैंने अभी, और इसको मेरे को यहाँ से हटाना है एस्केम से, ठीक है। अभी तो ये डीमोड रहते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, 11 क्रेट रेट, 7 क्रेट डैमेज, अच्छा तो नहीं है, बट ना से तो कुछ ही ठीक है। इसको कुछ, इसको एनहांस करते हैं, इसमें तो एचपी परसेंटेज है, ये अच्छा निकल गया तो हो जाएगा मुझे, कोलम भी ना निकल जाएगी। अब क्रेट में ही जाने थे सारे, वरना फिर फायदा नहीं है। एचपी भी ठीक है, चलो। बहुत ही कम गया अब चला भी जाता है ना, फिर फायदा नहीं है। हम्म, अरे रुको, अरे यार शिट, मेरे को ये कहना था, काम का तो नहीं है। 20 क्रेट डैमेज, ठीक है फिर ये भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी इतना अच्छा नहीं है। ये हम डाल सकते हैं, इस पे डालते ही हैं, तो ये डालते हैं, ये भी अच्छा नहीं गया। एचपी एलिमेंटल मास्टर एम अटैक 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 अटैक, सारे अटैक है। ये पायो डैमेज बोनस, इस पे तो हमें क्रिएट रेट, एचपी का कुछ फायदा भी नहीं है, बेसिकली हमें कुछ भी नहीं मिला। अच्छे पीस है पर वो है ही नहीं, मतलब है ही नहीं है अच्छे पीस क्या। तो अब ये स्टार्ट करते हैं। Hey, Durin! Any more clues for us? We're all set for the next chapter. Yeah, I was just about to come find you.
Now sprout to life, then on that breeze the music lead. Seek the place where wind and tale entwine, and once there, make 3 riddles into verse, and 3 melody, for in poetry and song will this story start to blossom. Come on! Another riddle? Oh! Care to elaborate? Wind, music, poetry. Tone-deaf bards gotta know the answer. You mean Lord Barbados? Albedo introduced us when I first arrived in Mondstadt. It's better that it's out in the open anyway. Now, how should we track him down? जरूरत ही नहीं है, खुद ही आ जाएगा. I'm pretty sure he's already caught wind of what's going on here. Why don't we just see where... Right. He definitely makes it easy to forget he's a real god sometimes. वेंटी भूली, वेंटी को याद ही नहीं करता कोई, बेइज्जती होता है ये तो. यहाँ पे ये एक परमानेंट गेम आ रखा है ये वाला. सिर्फ 10 पे मुझे मिलते तो है, पर कि मैं इसको करता नहीं. Traveler, Paimon! What a sight for sore eyes. Ah, and the little dragon from the fairy tale world. I heard your voices calling out to me on the wind. Something about needing help with a riddle? Sorry to disturb you, Lord Barbados. Disturb me? Not at all. To tell you the truth, I'm just as curious about this riddle as you are. Let me take a look. What is it? Did you figure out the answer? 3 riddles and 3 melodies. That sure takes me back. The answer you seek lies hidden in memory. Looks like running to Tone-Deaf Bard was the right call after all. Long ago, those mages came to Mondstadt, seeking to test their strength against mine. But I replied, let us make music, not war, and resolve our conflicts through song. So I strummed my lyre and sang them this verse. O wind, welcome now, my guests. Pass through verdant leaves unseen, where shape your formless self may take, and offer up a graceful scene, a fleeting gift for welcome's sake. Leap at the edge of a sea of clouds, where land meets sky and sky meets ground. There frighten off the noisy crowds and bring my guests a calm profound. Fly beneath the stars up high, where mortal noise is swept aside, that my dear guests with starry eyes may share the dreams they hold inside. Now go to where I vowed to keep a quiet spot for them to sleep. No clash, no contest bars the way, just tea and mirth to fill the day. There you have it, the 3 melodies. As for the answers to those 3 riddles, I trust you can guess them by now. The what's the... Correct! Funnily enough, your mother was also the first to solve it, all that time ago. There must be some kind of special rapport between those who write stories and those who sing them. The woods, a cliff, and the sky. Oh! So that's where it is! I suppose the spot that answer points to is where you're headed next. You should know, after solving my riddle, the mages even accepted my proposal and made that location their official meeting spot. And going by what your book is suggesting, once you found it, you might want to try playing the melody I just shared with you. Guess you can be pretty reliable when it counts, huh? Great animal Archon? Thanks for the help, Lord Barbados. Still got questions for me, huh? बारबेडोस Yeah,
You must have read countless tales in your time, being a wandering bard and all. In your experience, why might an author consider a story unfinished? Unfinished? Well, I guess if there's something left to accomplish in the story, or, if the last line goes, "To be continued." Huh? Wow, your helpfulness lasted for like 1 second. In all seriousness, I would think the answer to that question lies in your mother's story itself. It's not my place to pry any further. All right then, we should get going. मैं यहाँ पे जाना है दोबारा उसे करता हूँ Okay, we're here! Now, we just need to play the 3 melodies, and we should be able to gather the memories for the next chapter, right? A musical performance? Huh. Out of all the things Miss Lisa has taught me, that's the one I'm worst at. अरे यार फिर से नहीं अरे ये तो बहुत ही खराब है Even a war that shook the world could not halt the witches' gatherings. Yet even so, with the passing of time, 3 of their teacups no longer came to be set. The witches did not linger long in sorrow, for the Story Witch had brought glad tidings of her own. Born was her dragon child, safe and sound. Her fellow witches offered up their blessings, eagerly debating how to celebrate the child's birth. In the end, they settled on the most vibrant balloons they could find. After all, what could be more joyous than the arrival of new life? And so, the witches' gathering turned into a birthday celebration. So, we're back in the story world, huh? As if from nowhere, new guests appeared at the witches' table. Perhaps they too had come to celebrate the dragon child's birthday.
Yet while everyone else was busy thinking about what kind of gift to offer, these three seemed to have come hardly the recipe for a warm welcome to a birthday party now is. A gift? Hey, what's this all about? We only just found out this was a party. While the guests voiced their complaints and grievances, perhaps they should have been wondering what kind of gift to give instead. So, we need to bring a gift to advance the story? Oh, but where are we supposed to get something like that? Perhaps it would be a good idea to have a look around. Why didn't you just say so? क्या ढूंढना है यहाँ पे? Look for the potential gift. The witches went on chatting away, ignoring the empty-handed guests. पर ढूंढना क्या है? मैं तो अपने आप ही आ गया. Hey, could we use these as gifts, maybe? At last, the guests found something to give the dragon child. Guess that's a yes then. Which one should we go for? Still, the guests wondered what kind of gift might the little dragon really want. Should they put a warrior's sword in his hand and send him out on an unstoppable quest to save the world? Or perhaps a wandering hero's slingshot and the promise of a life of endless, uncharted adventure? Or maybe even a scholar's tome and the chance to take on all the world's unsolved mysteries. मैं तो narrator choose करूँ. वो narrator Okay. book choose करूँ. Wow, that's a lot of pressure all of a sudden. Oh yeah, technically we're actually picking a gift for you. So, which one would you prefer? You want me to choose? और Wow, this feels kind of special. How come? For as long as I can remember, I've spent most of my time living in the stories my mother created. I always thought my mother had everything written out for me already, just like the toy figures in Constellation Metropole. What I wanted to do with my own future. Huh. That's something I've never really thought about. What did I want back then? Ah. This is the first time I've ever asked myself that question. Sounds like this is the perfect opportunity to answer it then. It's been a while since you left Simulanka, and after everything that's happened, it might be about time to start thinking about your future. Then let me give it some thought. क्या choose करना चाहिए मेरे को? अरे हो जा भाई. In the end, the guests settled on the scholar's tome. So you're the scholarly type, huh? I just feel like I should learn more about the way the world works. What makes you say that? I'll give you an example. Did you know that in Mondstadt, using fire to catch fish is a punishable offense? I thought she was just teaching me regular hunting techniques. It was only after Master Jean caught me and sent me to solitary confinement that I realized I'd misread the situation. So much of what's considered common knowledge in your world just wasn't in Simulanka. So I have to learn, or I'll keep causing trouble for everyone else. Paimon's not sure that counts as common knowledge.
now that we've got a gift, right? Hello there. Brought a gift this time? The newly arrived guest presented his gift, wishing the little dragon a future as a wise and accomplished scholar. Accepting the guest's blessing, the Story Witch invited him and his friends to take their place around the table. Finally, she could introduce them all to her dragon child, telling all in attendance about the moment of his hatching, and of course, the name he'd been given. It was then that the Seer Witch, diviner of the stars, withdrew her gaze from the heavens and turned a sorrowful glance upon the little dragon. You gave him the same name as that evil dragon? That's right. But the life I intend for him shall be very different. What folly to love so blindly. For as you must know, a name is the mirror of destiny itself. He who bears an evil dragon's name must also inherit the fate of its previous owner. His fate has been foretold. Then I'll rewrite it. The witches at the table fell silent, for they knew the Seer Witch's words had never once proven wrong. Yet, just as clearly, at last, the Merry Witch stepped forward, dispelling the uneasy silence. So be it. Then we'll all lend a hand. Together, we shall rewrite this child's fate. You mean to defy one of the fundamental rules of this world? I refuse to be shackled by such rules. Besides, this is a witches' gathering, is it not? What could be more fitting a subject for this occasion than to defy them? Oh? Sounds like an interesting experiment. I suppose, were we to succeed in this endeavor, we might bring a touch of wonder to this otherwise dreary sky of stars. The Merry Witch finally talked them all round, just like she had done many times before. Warm and strong as the sun she was, and so For this child, I shall call upon wondrous magic to make possible his impossible wish. all the Story Witch had for this child with the witches. In the midst of the dragon child's birthday celebration, the Seer Witch proclaimed her prophecy. The child had been given the evil dragon's name, and with it, the burden of its fate. But hearing this, the Story Witch vowed to rewrite it all, for such was her love and resolve. And so the other witches offered their gifts in turn, marvels as rare as any in the cosmos. Together, they sought to test one of the fundamental laws of this world, in part to support a mother's love, and in part to sate their own curiosity. Oh, and I almost forgot. Our new guests came bearing blessings of their own. Who knows? Perhaps this extra dash of wisdom might be all the little dragon needs to change his fate. ओके चल 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 बहुत टाइम लगा रहा Yep, those witches in the but The evil dragon. oh, is that what you're worried about? But Ah, the mages must have had a hand in that. Also, I was just thinking, which part of the story are we even meant to be completing? oh, it That's a good feels question. less like we're filling in the gaps and more like we're adding something new altogether. But we use the ink, right?
And the book hasn't given us any more clues, so that must mean our task is complete. At least for now. Yeah, I guess we're doing something right. Don't know. Maybe I'm overthinking things. It's just, this is my mother's final wish. So Anyway, thanks for all your help. Okay then. Next chapter. हमें यहाँ पे कल आना है, ठीक है? तो फिर से हम अटक गए हैं डे क्वेश्चन। पहले इसके 4 दिन गए, 3 या 4 दिन के, वो देखेंगे। तो अब और क्या करें? और भी कुछ करते हैं। हाँ, वो करते हैं ना, वीकली बेसिस करते हैं हम। हमें क्या चाहिए? 11, 7, 18 बहुत है। बहुत ज़्यादा ही होने वाले तो 5 में देखते हैं। ये तो है, रेट चेक कर ही लिए। 9 बहुत है, थोड़े से कम है बिल्कुल। 11, ठीक है। 19, 22, ओके 19, 13, 8 लिखने वाले तो करने नहीं है। 12, 11, 0। 1 सेकंड के लिए ये वाले कर सकते हैं। ये तो मुझे लगता नहीं, इसके तो मैंने सारे ही कर लिए थे मटेरियल वाले। 8, 6 और 5, एक ही एक करेंगे। ये करते ही है ना। इस पे लेके जाऊंगा मैं माविका लेके चलते हैं इस पे। तेरी माविका अपनी मेल्ट बेस्ट। अभी तक की तो बेस्ट टीम यही है पूरे गेम की। Try and stop me! 2 मिनट आगे Let it be known तक ये हो that divinity is mine. Churn! Burn it down! Everybody stand back! Let light of the blazing sun! खत्म। I am the all-knowing God. Off we go! Adventure time! Off we go! Burn to oblivion! Now, your eyes have been opened. Reality Let the magic fade foil! Get to work! Rise with the sun! Good riddance, cruel world. Let's light it up! Benny's adventure team! I have failed. Now, your eyes have been opened. Not possible.
Time to end them! Pyroclastic surge! I can't. I'm so dead. फिर भी ठीक है, काफी ठीक है। ठीक है, नहीं चाहिए हमें ये वाला आर्टिफैक्ट। तो एक तो ये हो गया, एक मेरे को तो बहुत गुस्सा आया भाई, जल्दी मार दिया था मैंने। पहले तो बहुत ही जल्दी मर गया, एनर्जी बनने के चक्कर में मर गया। चले जाता हूँ मैं से। Adventure time. चलिए अब देखते हैं कि उन्हें और क्या बनना है और क्या करना है, मतलब बनना क्या है। 14, 4 और 10, एक ये वाला भी कर ही लेते हैं। इसको ना नेक्स्ट वीक भी करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको ना फुल कर देंगे ताकि इन फ्यूचर कभी भी आर्टिफैक्ट की इसमें जरूरत पड़े तो हम चाहिए यार इसमें, क्योंकि 30 में ना हमें आर्टिफैक्ट भी मिलता है एक, उसके साथ साथ हमें मटेरियल भी मिलता है, असेशन मटेरियल। Thunder. Your verdict is decided. Fulfill our task! Suffer the wrath of the light of the blazing sun! Let the engine! Ymir crumbles before me. और क्या करना है हमें, देखा मिल गया ना हमें एक कितना मस्त है यार, बोलते ही मिल गया। अरे हमें एक ड्रीम सॉल्वेंट भी मिल गया, वाह। ड्रीम सॉल्वेंट तो मेरे को हर हफ्ते मिलता है एक, मेरी 30 हफ्तों में 30 में मिल गया। अब मैं यूज भी बहुत करता हूँ, ड्रीम सॉल्वेंट बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मैं, पर मैं तब भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, चल मैंने ये भी कर दिया। अब और क्या देखते हैं। ये तो मेरे पास 0, 4 है, बिल्कुल ही कम है। इसकी मेरे को जरूरत ही नहीं है ये वाले की शायद, इसे से है ना उसमें जरूरत पड़ेगी एक ही बार चाहिए। ये वैसे राइडन को यही चाहिए था और है मेरे पास वो, और क्योंकि बाकी के जो है मैं उनको लूंगा नहीं, तो एक ये कर लेते हैं। इस माविका के साथ ही कर लेते हैं। माविका के साथ करने के साथ कर देते हैं, ठीक है ये भी। Burn it down! ये तो है जीरन है, सिर्फ एक यही है जीरन वाली और है। Light it up! Let's light it up! एक बार मारना। Everybody stand back! You two! Time to erupt from the skies!
Let's light it up! Get to work! Burn it down! Bring it! Teamwork is dreamwork! Fulfill our pact! Keep lolling! Keep pop! Light of the blazing sun! Light it up! I'm going in! Let's light it up! Show no mercy! Suffer the wrath from the sky! Full throttle! काफी अच्छा, काफी एक और ड्रीम सोलवेंट मिल गया भाई। मेरे को 2 मिल गए एक ही हफ्ते में। एक मेरे को ना वो भी मिल गई स्वॉर्ड बनाने के लिए। और हमें क्या चाहिए? एक चाल, हाँ हमें एक मन थोड़ा ठीक हो जाएगा। मून लाइट में डाल देते हैं सारा। मून लाइट इसमें क्या है? मुझे शायद ना वही लगेगा ना। No more love. Don't claw! Leave this place. Dive across me. Can't hide the truth. जल्दी खत्म हो गया। काफी अच्छा है। मेरे पास है 22 pieces। 22 का भी इसके बाद भी कुछ करेंगे हम। चलो फिर आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि कल भी ना छोटी स्ट्रीम रखेंगे और फिर कल के बाद ना बड़ी स्ट्रीम रखेंगे। अभी क्योंकि ना है ही नहीं कुछ करने के लिए अभी के लिए, तो देख सोचता हूँ मैं कुछ करने के लिए।